page 69 page 69 my lord जी जी कहाँ से पढ़ें जी कौन सा पैराग्राफ जी para D जहाँ parenthesis D paragraph से what the Honorable Supreme Court was saying regarding so far therefore as this court is concerned it has never claimed to be above the Constitution nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution which it has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which it acquires not dehost the Constitution by virtue of the fact it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government and is that branch thereof which is intended to interpret, construe and apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the Constitution may well provide for a great many things, such as the subjects in respect of which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers or only act as a court of secession or only decide constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right to adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare what the law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection, but it has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functions disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court. And Parliament cannot interfere in that because it's exclusively given. If it was, then it would have said, until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But when it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharif Afridi's case? That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji.
And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. ये I think if you argue in context Ji. of Pakistan Ji. and what's happening and why presumably the legislator enacted this law. Ji, I understand, sir. No, you're not. Ji. Now let me pose a certain Ji. queries to you. Ji. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184 में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तुम्हारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब जरा सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में उसका तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं है उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त कि चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट सेल बना सकता है, या तो क्या ये है। तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई सीढ़ी के 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही क्या गलत क्या हो तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में, अब देखिए इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चलें खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही था, फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसको वो नज़रअंदाज करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहाँ तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपने वजाहत नहीं की कि आप किसके लिए अपियर हो रहे हैं। चलिए खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम अगर हम इस कानून को ख़त्म कर देते हैं, कलअदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहूं जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा? इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूं इस बात। मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, मैं आपका मौक़िफ़ समझना चाह रहा हूँ। मेरे मुंह ना कहिए कि मेरा मौक़िफ़ है ये। सर
آپ کا موقف تو ہم سن چکے ہیں کہ آپ نہیں، میرا موقف نہیں ہے، آپ نے کہا کہ جی آپ اپنے پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا نہیں یہ وہ الگ بات ہے، یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی، جی پروسیجر والی بات الگ ہے، وہاں پاور کی بات پہلے میں آتی ہے۔ پوچھا ابھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا، میں ابھی آپ نے 175 کی جو بات ہو رہی ہے تو سر اس پہ آ رہا تو 184(3) میں تو پھر آپ سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ، اس پہ بھئی آپ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر آپ نے جی 11:30 تک کہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا، لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا، سب کو کہا تھا۔ اچھا سر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا، لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے، اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے، لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے نہیں ہیں، سر آپ حقیقت میں وہ آپ نہیں نے ہے۔ پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط، میں اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں جی نا۔ حل آ رہا ہوں نا صاحب، پہلے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا، دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی، جورسڈکشن کس کی ہے۔ نہیں میں آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال دی، میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو ہے، آپ کی کوئی رائے ہے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی، تو بتائیے نا اپنی رائے بتائیے۔ جی عابد زبیری صاحب، جی سر اسی کانٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ اس کے تحت سے 184(3) کو لے اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس، کیا پارلیمنٹ جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتی ہے اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتی ہے، کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں، ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں، از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ایکسیس ٹو جسٹس بالکل صحیح سر، پریکٹس میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا you had I think come on track, جی and I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it is for competence, sir. It is the question of competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, yes, but if somebody who is not competent to make it, Ji. it is in conflict with the constitutional powers, the trichotomy of powers hai. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ کس کی کمپٹنس؟ وہ تو بات ہم سمجھ گئے، آپ کا موقف یہ ہے، وہ تو بات سمجھ گئے، مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ، تو وہ آپ بتا دیجیے اس پہ، تو آپ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے۔ اپیل کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں، اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا، مائی لارڈ my answer is that it's not a matter of good or bad or غلطی, it is a matter of competence, whether my lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی آپ نے ایک لا چیلنج کیا ہے، جی اس کی ریپٹل کے لیے آپ نے نہ اسٹینڈنگ بتایا ہے نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں، آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس سر میں ہم ایک ایبسٹریکٹ میں جی وی آر سب 191 کی پہلے دیکھیں، آپ سے میں نے سمپل ایک سوال یہ پوچھا ہے، jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا ہے، جی ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو، یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو، جی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو، کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules or the constitution, then case should be brought before the honorable before the Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. آپ میرے سوال کا بھی تھوڑا جواب دیں۔ مجھے یہ بتائیے عابد صاحب جی، the Chief Justice exercised his powers before this law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first?
Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, only the power to regulate the practice and procedure rule-making power vests in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कर चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप Article बताएंगे मेरे 199 सवाल. or अब आप 184? आबिद साहब, अब मेरे बात की High Court has also jurisdiction on 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं. It was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले वन बाय वन कर दीजिए. अच्छा, बहुत बेहतर सर. जी. अच्छा, 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज. नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है. मैंने जो आपको बातें बताई उसका सर, जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल. मैं ये बात नहीं की थी. मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ. मैंने जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं, दैट्स भी अपील होनी चाहिए. मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना. आपके यहाँ हुआ है, सारे सही हुआ. मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है. जी मेरा ये स्टैंड है. और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब. ठीक है. अच्छा, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए. आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिल्कुल मौक़िफ़ है जी. अच्छा, अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है. हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर जी? हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस जी. हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में. दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ अब ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं. नहीं सर, आपने ये आपका मौक़िफ़ होगा. आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं. जजमेंट करना सवाल है. 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्नना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है. 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है. आपका कहना ये बिल्कुल हो सकता है. इफ माय लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया. बिल्कुल करें सर. इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व. नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है. अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर. व्हाट इज द मैटर? देखिए, दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली. वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको. तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें. इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल. आर्टिकल राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं जी. Access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. तो आप कह रहे हैं literal reading में तो नहीं है, interpretation. अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं. लिटरल में नहीं है, implied reading में है. नहीं, judgments of the honorable which is binding on us is says कि जी access to justice in high court